स्टार्ट करिए. So Bowen's reaction series. So there is a scientist named N.L. Bowen. N.L. Bowen. He gave a series about the sequence of mineral crystallizing from a basaltic magma. मुझे कौन सी magma जितने फॉर्म हुई तापर ग्रेजुअली सी राइज टू द सरफेस. सो नॉर्मली सरफेस को राइज करियो, सरफेस जो राइज करियो तो ग्रेजुअली सी कौन कूलिंग हम. तो कूलिंग हेले तादरु हम पढ़िले डिफरेंट वे यूनि कंपोनेंट बोला, बाई कंपोनेंट बोला, डिफरेंट टाइप रो बोला जोतरे कि magma धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन हवा स्टार्ट. तो magma तरे ग्रेजुअली क्रिस्टलाइज होतु. तो तार कंपोजिशन हम देखले जे बड़ा यूटिलिटी रे पढ़ले लिक्विड कंपोजिशन ग्रेजुअली इवॉल्व हो. लिक्विड कंपोजिशन ग्रेजुअली इवॉल्व हो. सपोज आम एग्जांपल नौचंदी, सपोज धर इनिशियली मो पाखरे magma अछि तादरे ए बी सी डी ई एफ जी एच इनदी मल्टीपल कंपोनेंट अछि. तो जेतले आर टेंपरेचर धीरे धीरे कमिबो, धर ए क्रिस्टलाइज हे गेला. तो जेतले ए क्रिस्टलाइज हे गेला देन रेस्ट ऑफ द लिक्विड कंपोजिशन चेंज हे गेला. तादरे ए नै धर कि तापर बी सी क्रिस्टलाइज हे गेले तो कंपोजिशन चेंज हे. तो ग्रेजुअली जेतेबेले क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू करिवो, जेतेबेले क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू करिवो द लिक्विड विल इवॉल्व and different mineral will crystallize. So Bowen's reaction series सेटा दी कि how or on what sequence mineral will crystallize. जेतले mineral crystallize हबो from a basaltic magma तो हाई टेम्परेचर किए हबो बाय इनिशियली किए हबो तापर किए हबो एबा सब सीक्वेंस से दिए होछ के Bowen's reaction series. इट आल्सो रिप्रेजेंट कि गोटे basaltic magma how it diversify with time. जो हम कहले एठी मेल्ट धर ए क्रिस्टलाइज हे गेला तब रेस्ट ऑफ द मेल्ट रे जहा रहला से की चेंज हे गेला, से कह गेला तार कंपोजिशन चेंज हे गेला. हमें ताको इन जियोलॉजिक टर्म ताको डाइवर्सिफाई हे गेला बा तार कंपोजिशन चेंज हे गेला. ए सिंगल जिंस जेतेले क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे हबो तो मेल्ट रो कंपोजिशन धीरे धीरे चेंज हबो. सपोज क्रिस्टलाइज करके फास्ट से धर ए देला तो ये गोटे रॉक प्रोड्यूस कला जो ए रहा तापर बी सी देला, बी सी क्रिस्टलाइज देला, सी गोटे रॉक प्रोड्यूस करबे बी सी. गोटे magma रो डिफरेंट कंपोजिशन रो रॉक प्रोड्यूस हे पारे. बुझछ ना नहीं. तो जेतले मल्टी कंपोनेंट थिंग जेतले क्रिस्टलाइज करछ तो एट लास्ट जेतले सी ईच तुमरा टेंपरेचर टर्म रे से किछिटा क्रिस्टलाइजेशन करी करी चली. इस टर्म रे से कौन जीरा क्रिस्टलाइजेशन करी करी चली. सो तार ग्रेजुअल विथ टाइम सो डिफरेंट मिनरल क्रिस्टलाइज हेबे. जो डिफरेंट मिनरल तार क्रिस्टलाइज हेबे तो मेल्ट रो कंपोजिशन ग्रेजुअली चेंज हेबो. ता माने मीनिंग होची कि गोटे magma रू यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक एंड दिस थिंग विल ग्रेजुअली इवॉल्व टू अनदर कंपोजिशन. So Bowen's reaction से कथा भी कहूची how a basaltic magma diversify to give different type of mineral. So we'll see what is the series. So Bowen's reaction series, this is a Y-shaped series. So started with olivine. मतलब crystallization start of first of olivine, तापरे Pyroxene, Amphibole, Biotite, then feldspar. So Olivine, Pyroxene, Amphibole, Biotite, feldspar. Then it तुम्हारा आसीबो albite, Oligoclase, andesite, labradorite, bitonite,
anorthite. ଆସିବ mica, তারপর আসিব quartz, then your so this is your Bowen reaction series. It started from olivine, then pyroxene, then amphibole, then biotite, and it started from 1100 degrees centigrade and aimed at quartz, that is at 573 degree centigrade. So this is your Bowen reaction series. It represents the sequence of mineral crystallizes from a basaltic magma. So what a basaltic magma is crystallize करे. It started crystallization from olivine, then pyroxene, then amphibole, then biotite, then cave feldspar. This is along with olivine you will find anorthite, biotinite, labradorite, andesite, oleoclase, albite, and then cave feldspar, mica. Then it ends with quartz. Then this is the last product of crystallization. Always in case of magmatic crystallization, the last product is called as hydrothermal solution. जेतिकी तुम लास्ट को बढ़ी जाए ताको हम कहते हैं hydrothermal solution. So it started from 1100 degree centigrade to 573 degree centigrade. 1100 degree centigrade to start with, 573 degree centigrade per. So it represents the sequence of mineral crystallizes from a basaltic magma. Okay. So this is a Y-shaped series. This is a Y-shaped series. So this part it is called as your discontinuous series. Discontinuous. And this part is called as your continuous series. So this part is called as your discontinuous series. This part is called as your continuous series. So why this is called as a discontinuous? Because in this series, you see, first olivine will form from the magma. Olivine will form. Then the olivine that is formed, it react with the magma. It react with the magma to produce pyroxene. To produce pyroxene. That means to form pyroxene. Pyroxene formation हवा पाई olivine पूरा disappear करने को पड़ेगा. केमती? Suppose तुम पाखरे melt थिला तो 1100 degree centigrade पहुँचला तले तुम पाखरे olivine crystal produce होला. पहला olivine crystal produce होला. Then rest of the melt होला. Then next क्या produce होगा? Pyroxene produce होगा. Next produce होगा pyroxene. जितना temperature drop करेगा. But the pyroxene it will produce in expense of olivine. So जो olivine है ला, this olivine that is Mg2SiO4 it react with SiO2. So कहाँ से react करेगा? SiO2 सहित react करेगा. So the Mg2SiO4 it will react with SiO2 to produce 2MgSiO3. So this is your olivine. This is quartz, this is pyroxene. So this is melt, this is melt, this is crystal. So that means the olivine crystal that form, it will react with SiO2. It will react with SiO2, or you can say it will react with the melt to produce pyroxene. So that's why this thing is called as your discontinuous series. Discontinuous कहीं ना olivine इटी completely जितनी की produce ही तो सब जगह disappear करेगा बस सब जगह convert ही जो कुटी pyroxene. बुझ बात सब? So all the olivine that is formed, it will convert to pyroxene. So that's why it is called as discontinuous. Pyroxene जहाँ formation होगा, then pyroxene will react with melt to produce amphibole. Then amphibole will react with produce biotite. So that's why this series is called as discontinuous, because to produce one member
द अदर मेंबर विल डिसअपियर तो माने जते भी ओलिविन प्रोड्यूस हेतिबो से माने मेल्ट सहित रिएक्ट करेंगे कंप्लीटली दे विल प्रोड्यूस pyroxene. So that's why olivine pyroxene are called as reaction pair because they are linked by reaction. That's why this is called as they are called as reaction pair. So olivine and pyroxene are called as reaction pair. Simply तुम्हें कोई पर pyroxene amphibole are reaction pair. ये amphibole biotite these are reaction pair. So जितने crystallization ये होची ताले first olivine है ला तार pyroxene है ला तो ओलिविन जी प्रोड्यूस होती सब जगह कन्वर्ट हो पायरोक्सिन को पायरोक्सिन जी प्रोड्यूस होती सब जगह कन्वर्ट हो एम्फिबोल को कि एम्फिबोल जी प्रोड्यूस होती बायोटाइट तो जदि ये कंडीशन सब बड़े परसिस्ट कर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स वी शुड नॉट गेट एनी ओलिविन कहीं आम किसी ओलिविन पाइबा कथा नुहे कहीं जी ओलिविन प्रोड्यूस है जदि सी सब जगह रिएक्ट करके कन्वर्ट हो कौड़ पायरोक्सिन को ताले आम कौन प्रकार ओलिविन पाइबा कथा नुहे पुणी जी ओलिविन पायरोक्सिन प्रोड्यूस हो जब से रिएक्ट होगी प्रोड्यूस कन्वर्ट हो एम्फिबोल को ताले आम किसी पायरोक्सिन पाइबा कथा नुहे जदि ए थिंगटा ट्रू अच्छी कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिनरलाइजेशन एंड दैट्स हाउ दे आर फॉर्मिंग कि ओलिविन तुम पायरोक्सिन प्रोड्यूस हो इन एक्सपेंस ऑफ ओलिविन कि एम्फिबोल प्रोड्यूस हो इन एक्सपेंस ऑफ पायरोक्सिन तार आम पाइबा कथा ना लास्ट को खाली कौन पाइबा के फेल्सपार बंद पाइबा आउ किसी पूर्व किसी जिनस पाइबा कथा नुहे सो ये केमती होची जदि ओलिविन जी प्रोड्यूस होती कौन मत फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज हो जो आम कहते कि जिते यूटेक्टिक पढ़ुते फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द ओलिफॉर्म क्रिस्टल कैन रिमूव फ्रॉम द मेल्ट जदि से भाया कंडीशन आसला इन इक्विलिब्रियम कंडीशन स्लो कूलिंग न कि फास्टर कूलिंग है अदर कौन कंडीशन है तो से कंडीशन रे ओलिविन सेपरेटली प्रोड्यूस हो पार इंडिविजुअल तुम ओलिविन पाइब कि जब पायरोक्सिन भी सही कंडीशन पायरोक्सिन धर ओलिविन जी अच्छी कन्वर्ट होगा पायरोक्सिन को पायरोक्सिन पर्यंत क्रिस्टलाइजेशन है फ्रैक्शनल होगा तो पायरोक्सिन भी पाइपर तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन गोटे प्रोसेस जो एक्सप्लेन करे टू गेट ओलिविन पायरोक्सिन तोरा बुझीपार ना कि फास्ट कथा जी ओलिविन आम प्रोड्यूस हम से कन्वर्ट हो कौटी पायरोक्सिन को कन्वर्ट हो जी ओलिविन आमर प्रोड्यूस है यदि पायरोक्सिन को कन्वर्ट हो आम ओलिविन पाइबा कथा नुहे किंतु आमको ओलिविन मिलूँ केमी से जिनस एक्सप्लेन करवा कि थ्रू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सब बड़े माने नुहे ओलिविनटा रिएक्ट करके जिते भी ओलिविन प्रोड्यूस हो सब जगह मेल्ट सहित रिएक्ट कर पायरोक्सिन प्रोड्यूस करते कंडीशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन आसीपर जो जगह से माने रिएक्शन न करें रिएक्शन फेल्युअर हो पारे कि अदर कौन मत ओलिविन सेपरेट हो पारे देन दिस इज कॉल्ड योर कंटिन्यूअस सीरीज इट इज योर प्लाजियोक्लेज सीरीज एटा कौन प्लाजियोक्लेज सीरीज ना प्लाजियोक्लेज सीरीज तो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बिकॉज अनर्थाइट इट विल एक्सचेंज आयन विद द मेल्ट टू प्रोड्यूस बाइटोनाइट लैब्रोडाइट अंडेसाइन ओलियोक्लेज तो से कौन कहते कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर चलती तो से कौन कहुए कंटिन्यूअस सीरीज कहुए बिकॉज दे प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग और दे शो अ सॉलिड सॉल्यूशन दे शो अ सॉलिड सॉल्यूशन रिलेशनशिप तो सॉलिड सॉल्यूशन रिलेशनशिप शो करते तेणु से तुम यहाँ को कंटिन्यूअस सीरीज बोली कहुए दे मर्ज विथ के फेल्सपार दुईटा सीरीज को मर्ज होती के फेल्सपार देन तुम आसो माइका देन क्वार्ट्ज देन आसो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट लास्ट को तुम क्वार्ट्ज पाइब लास्ट को किसी सॉल्यूशन पाइब यहाँ तुम पढ़ इकोनॉमिक जियोलॉजी इट समटाइम्स हेल्प्स विथ इकोनॉमिक डिपोजिशन जोटा पूरा लास्ट को रही जाए रेसिडुअल लिक्विड रे तुम कहीपर जोटा कि क्रिस्टलाइजेशन हो न था माने थ्रू पोर स्पेसेस रॉक मूव करती से कौन सी जगह डिपोजिट होती सो दिस इज योर Bowen's reaction series. Then we will see what are the different thing or characteristic that changes with progressive crystallization. जो progressive crystallization होची from olivine to pyroxene, olivine to quartz कौन changes आसुची. जो olivine to quartz जतले मोर reaction proceed करची, बा crystallization progress करची तो कौन changes आसुची. देखिए डाउन द सीरीज जो आम जा देख
फास्ट आम देखा कौन चेंजेस हो फास्ट सिंपल वे रे कह गला तो टेम्परेचर डिक्रीज सिंपल कह कौन टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज कर बिकज एटा प्रोग्रेसिवली क्रिस्टलाइज कर तो टेम्परेचर डिक्रीज कर So you write down the following things happen or following changes occur down the Bowen section series. खाली heading लिखो तो following things or following changes occur down the Bowen section series. So first thing you can write down temperature decreases down the Bowen section series. Temperature gradually Bowen section series रे decrease कर. It started with olivine that is 1100 ended with quartz that is 573 degree. Then if we down the series you can see the SiO2 percentage. SiO2 percentage increases. SiO2 percentage increases. Any magma, any primitive magma or parent magma जोटा कह परिबो प्राइमरी magma जे कोनोसी केस से तुम देखो प्राइमरी magma जेतो क्रिस्टलाइजेशन हुए तारा ऑलवेज तादरे SiO2 परसेंटेज इंक्रीज करे ऑलवेज तादरे SiO2 परसेंट कम इंक्रीज करियो एनी पेरेंट मैग्मा नियो एनी मोर प्रिमिटिव मैग्मा जोठी तुमर मैग्मा जनरेशन हमें पढ़िले कि ए जगह मैग्मा प्रोड्यूस होची तो ए जगह तुमरा प्रोड्यूस होला पर ऊपर को राइज करची ऊपर राइज कले ग्रेजुअल क्रिस्टलाइजेशन होची तो क्रिस्टलाइजेशन भी आगे तुमरा MgFe मेंबर उरा क्रिस्टलाइज होती SiO2 सब लास्ट क्रिस्टलाइज हुए सेति पे SiO2 परसेंटेज टा मेल्ट रे कम हुए इंक्रीज करे सपोज धर तुम्हें कि एमती एग्जांपल लियो कि तुम पाखे ये जिनस अच्छी सब ए मोर बी सी एवं सब जिनस अच्छी सो तुम्हें कौन कल कि यहाँ मिसिकी अबिका 100% अच्छा तुम्हें कौन कल आगे ए को बाहर करदेल जदि ए को बाहर करदेल ताले बी सी परसेंटेज बढ़ी जदि मु बी को बाहर करदेली ए पर ताले सी परसेंटेज बढ़ी जेहेतु SiO2 लास्ट क्रिस्टलाइज हम तार परसेंटेज मेल्ट रे सब बढ़े तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू नो द प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन कि गोटे मेल्ट रे SiO2 परसेंटेज को देखि तुम जानि परबे जे क्रिस्टलाइजेशन केते प्रोग्रेस करछि एटा को हेल्प एटा को यूज करा जाय तुमको डिफरेंट इवोल्यूशन ऑफ मैग्मा स्टडी करिया पे SiO2 परसेंटेज को सब बेले SiO2 percentage will increase against all oxide जे कौन से ऑक्साइड अगेंस्ट से SiO2 परसेंटेज इंक्रीज करे कारण SiO2 सब लास्ट तक क्रिस्टलाइज है तो जे कौन से तुम जे कौन से ऑक्साइड अगेंस्ट से प्लॉट करिवो SiO2 सब बेले इंक्रीज करिवो विद इन द मेल्ट रे सब बेले इंक्रीज करे तापर देखिया ऑलिविन पैराजिन टू नेकी जदि हम क्वार्ट्ज पॉन देखिबा हले तो ऑलिविन देखा है नेसो सिलिकेट ऑलिविन कौन देखा है नेसो सिलिकेट तो नेसो सिलिकेट सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो केते 1:4 तो कि नॉन ऑफ द ऑक्सीजन इज शेयर्ड नेसो सिलिकेट रे कौन सी भी ऑक्सीजन शेयर ही नहीं हम ताको आइलैंड सिलिकेट बोली कहते जो बा तुम्हें ताको हमें आइलैंड बा तुम नॉर्मली जो कि नो शेयर्ड ऑक्सीजन बोली कह जाए सो से जो ऑक्सीजन जो सी किसी भी शेयर करूनी ताले जिते पायरोजिन कंडीशन को आसो पायरोजिन जो फॉर्मेशन होची सेते माने दीटा ऑक्सीजन शेयर करते देखे आयन सिलिकेट तापर जेते एम्फिबोल पळे आसुची से तीनटा ऑक्सीजन शेयर करछ तीनटा ऑक्सीजन शेयर करछ तापर तले बायोटाइट से तीनटा एम्फिबोल 2 और 3 करते बायोटाइट रे सब तीनटा करिवे सब टेट्राहेड्रल के फेल्सपार पळे आसलो चारिटा शेयर करछ तो जेते डाउन द सीरीज आमे जाउछंती SiO polymerization increases देखा एला बुझ पाला SiO2 polymerization increase करछि with depth तापर आमे जिबा यदि ऑलिविन देखिबा इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम आयरन ऑलिविन कोन थाए मैग्नीशियम और आयरन थाए जिते डाउन द सीरीज जीवो MgFe and Ca percentage will decrease जिते हमें डाउन द सीरीज जीवा कहना एठी तुमरा ऑलिविन पैराजिन होची मोस्टली मैग्नीशियम आयरन मेंबर जिते डाउन द सीरीज जीवा तांकर परसेंटेज धीरे धीरे कमी कमी जीवो मोस्टली इट विल एनरिच इन सोडियम देन लास्ट को तुमरा SiO2 पाइबो यदि अनर्थाइट केस देखिया सेठी तुमरा दैट इज कैल्शियम रिच अनर्थाइट इज योर कोन कैल्शियम रिच
जते डाउन द सीरीज जीवा और इट विल बिकम मोर सोडिक तेणु जदि पोटासियम एंड सोडियम देखिबा इट विल increase. So potassium sodium will increase with depth and magnesium iron it will decrease with depth with tomorrow progressive crystallization. बुझ पाइला. So SiO2 percentage increase करिवो SiO polymerization increase करिवो तार साथ MgFeCa will decrease, potassium sodium will increase. Then जते हमें down the series जीवा, then again देखो with down the series the stability increases. Down the series stability increases. So stability कौन कि olivine टा होची it is formed at a greater depth. So olivine it is more prone to weathering, बहुत easily weathered ही जाए, but quartz it is very stable or you can say very resistant to weathering, है ना. तो देखो olivine it will be it is formed at the initial stage, it is very prone to weathering, and quartz it is very resistance to weathering. तो कि chemical physical both type of weathering को एटा resist करिवो कि quartz. So जो rock रे तुम्हें पाइबो olivine कि तुमरो initial member of Bowen section series से rock रा सबले weaker हो. तो तुम्हें basalt देखा, basalt होची तुमरो olivine pyroxene plagioclase ये सब था सेटा बहुत weaker, बहुत easily weathered हो जाए. तुम्हें granite देखियो, granite रे quartz और k feldspar था में अधिक सारा स्टेबल थी. विथ प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन जेहेतु आम कहले SiO2 परसेंटेज इंक्रीज करुची, SiO2 परसेंटेज इंक्रीज करुची, तो से अनुसार विस्कोसिटी भी इंक्रीज करियो. कहना अर्लियर मेंबर गुरा लेस विस्कस हेबे, लाटर मेंबर गुरा हायर विस्कस. तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस. Viscosity gradually कहाँ हुआ increase करेगा with progressive crystallization. So with progressive crystallization, viscosity increases. Then with progressive crystallization, मोर जेते तुम्हें crystallization प्रोग्रेस करिबा बोथ मेल्ट बा बासाल्टिक मेल्ट जोटा मेल्ट इनिशियली नहीं सेटा ग्रेजुअली इवॉल्व करिवो तार साथ जहाँ रॉक प्रोड्यूस होची से माने भी इवॉल्व करिवो. तब इनिशियली यू विल फाइंड अल्ट्रामाफिक रॉक को पाइबो, अल्ट्रामाफिक रॉक बा अल्ट्रा बेसिक रॉक जोथरे कि मैग्नीशियम आयरन कंटेंट अधिक था. तो इनिशियली यू विल फाइंड फर्स्ट इनिशियल स्टेज है तुम्हें एटी पेरिडोटाइट को पाइबो, पेरिडोटाइट कोमाटाइट ये सब रॉक पाइब जोटा कि अल्ट्रामाफिक, पेरिडोटाइट कोमाटाइट जो कि तुम्हें ऑलिविन पायरोक्सेन अनर्थाइट भी खाली ऑलिविन तुम्हें पाई परिबो, प्लाजियोक्लेज किछटा पाई परिबो. तापर को जतबे क्रिस्टलाइजेशन प्रोग्रेस करिवो से बासल्ट गैब्रो सब प्रोड्यूस करिवो. कोन करिवो बासल्ट गैब्रो ए सब प्रोड्यूस करिवो. तापर एंडेसाइट प्रोड्यूस करिवो and at last it will produce suppose granite जोटा कि acidic rock. तो जेते तुमरो प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन हबो सेते एसिडिक कंडीशन आडू को मेल्ट गुरा प्रोग्रेस करिवो SiO2% जेहेतु इंक्रीज कर. तो एमिति भी रॉक रो कंपोजिशन चेंज हो, सेमति भी लिक्विड रो कंपोजिशन भी चेंज हो. फास्ट हमर बेसिक थिबो तापर इंटरमीडिएट हबो, इंटरमीडिएट हला परे एसिडिक हबो. तो एंडेसाइट होची इंटरमीडिएट, बासल्ट गैब्रो होचंदी बेसिक, एरा होचंदी पेरिडोटाइट होचंदी अल्ट्रामाफिक, ग्रेनाइट होची एसिडिक रॉक. तो ये तुम रॉक रो कंपोजिशन डाउन द सीरीज चेंज हुए. बुझ पाइला. तो ये सब चेंजेस आसे ड्यूरिंग मोर प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन इन द बाउन्स रिएक्शन सीरीज. So another important thing that explained in Bowen's reaction series, that is your dolomorphism.
So we'll see what is doliomorphism. Doliomorphism. So doliomorphism, it is a phenomenon where you'll find very unusual association of mineral within a rock. You'll find very unusual association of mineral. You can say unusual association of mineral within a rock. तो हम देखले बाउंड सेक्शन सीरीज रे ओलिविन प्रोड्यूस होउची at 1100 डिग्री सेंटीग्रेड. देन सब हमर क्वार्ज प्रोड्यूस होउची 573 डिग्री टेम्परेचर. सो जो टाइम रे ओलिविन प्रोड्यूस होतो से टाइम रे केबे भी क्वार्ज नथिबो. जो टाइम रे ओलिविन प्रोड्यूस होतो से टाइम रे केबे भी क्वार्ज नथिबो. तनु करी कोनोसी रॉक रे you will never find olivine and quartz together. So olivine and quartz, that's why called as incompatible pair. तो कौन कौन olivine and quartz basically मन रखते हो फोस्टेराइट and quartz. Okay, फोस्टेराइट and quartz, basically फोस्टेराइट and quartz, they are incompatible pair. Incompatible pair माने ये पर्सन ना नहीं कि they can never occur together. बुझ पारछ. so olivine प्रोड्यूस होची 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रे, quartz प्रोड्यूस होची 573 डिग्री टेम्परेचर रे. सो दैट टेम्परेचर फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम से माने कोनसी गोटे सिंगल रॉक रे तुमको मिलबे नाही. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनकम्पैटिबल पेयर. अनदर यू कैन राइट डाउन फेल्सपार थर्ड एंड क्वार्ट्ज. फेल्सपार थर्ड and quartz, nepheline हो, cyanite हो, nepheline एरा सब कौन, they will not occur together. nepheline, quartz एरा सब occur करेंगे. so feldspar third quartz भी they are also incompatible. इटी मन तो phosphate quartz incompatible but phyllite quartz compatible. phyllite और quartz compatible हे परिवे. तुम सबले हमरो normally कहा जाए olivine and quartz are incompatible pair. बट olivine रे फोस्टेराइट ही क्वार्ट्ज रे इनकम्पैटिबल. फाइलाइट इज कंपैटिबल. फाइलाइट सहित तुम क्वार्ट्ज एसोसिएशन पाई परिबो. बट जदि तुमको गोटे रॉक रे olivine और क्वार्ट्ज मिलिले टुगेदर, olivine, pyroxene and quartz टुगेदर गोटे रॉक रे मिलले, इट विल बी कंसीडर्ड एज वेरी अनयूजुअल बिकॉज़ olivine and quartz will never occur together. So that is called as your doliomorphism. So how it will occur? So doliomorphism occur when there is partial failure of reaction during formation of pyroxene from olivine. तो इतले तुम्हारा partial failure of reaction during formation of olivine, सॉरी pyroxene. जितने तुम्हारा pyroxene फॉर्मेशन होता है सही टाइम रे समटाइम्स कौन हो रिएक्शन फेल्योर हुए कि रैपिड कूलिंग है कि कौन सडन थिंग है. तो सब जाक जिते भी कोर अच्छे दे विल नॉट रिएक्ट विथ olivine. तो किसी olivine भी रही है, किसी olivine क्रिस्टल भी रही है. SiO2 मेल्ट भी किसी बॉडी पड़ो से SiO2 मेल्ट किसी रेसिड्यू रही है. क्या ना रिएक्ट कर रिएक्ट कर olivine क्रिस्टल टा रिएक्ट कर SiO2 मेल्ट सहित ये क्रिस्टल ये मेल्ट. तो जदि रिएक्शन फेल्युअर है पार्शियल फेल्युअर है ताले किसी olivine क्रिस्टल भी रही है, किसी SiO2 मेल्ट भी रही है. ता सहित pyroxene किसी प्रोड्यूस हो क्या रिएक्शन किछिटा हो किसी फेल्युअर हो. तो जी होते तुम pyroxene किसी पाइब. पार्शियल फेल्युअर है तुम olivine पाइब ता सहित SiO2 मेल्ट पाइब. तो SiO2 मेल्ट तुम पाखे अच्छी olivine अच्छी pyroxene अच्छी सडन कूलिंग हो. पार्शियल फेल्युअर मीनिंग कौन सडन कूलिंग होगा. सडन कूलिंग होगा माने सपोज इट कूल डाउन टू 573 डिग्री टेम्परेचर. तो 573 डिग्री टेम्परेचर को कूल डाउन होगा टेम्परेचर कमी गला ताले SiO2 मेल्ट विल क्रिस्टलाइज. SiO2 मेल्ट कौन क्रिस्टलाइज. तो आम पाखे ये टुगेदर कौन थी olivine थी pyroxene थी SiO2 मेल्ट थी 573 होगा olivine pyroxene SiO2 मेल्ट प्रोड्यूस करियो क्वार्ट्ज. तो आम गोटे रॉक पाया जो थी olivine pyroxene quartz. So this is called doliomorphic rock. तो कौन कह doliomorphic rock.
doliomorphic rock. So this rock, it is contain very unusual occurrence. Example तुम्हारा नहीं पाए lamprophyre. Lamprophyre is a rock that shows doliomorphism. So lamprophyre is a rock that shows doliomorphism. So lamprophyre रे कौन हुए? You will find unusual occurrence of olivine, pyroxene and quartz. So it is occur because of inequilibrium तुम कहीं पर partial failure of reaction. It is occur because of quartz. तुम्हारा residual melt of SiO2. तो SiO2 जितने इटी reaction करे, sorry जो crystallize करे, ये जो residual melt, जितने quartz को क्या जाए release mineral. जो SiO2 residual SiO2 melt जितने residue SiO2 melt जितने crystallize करे, से quartz produce करे, that quartz is called as release mineral. कहना इटा कोट होची, it is released during the partial failure of reaction. Partial failure of reaction है जहाँ residue रहेगा SiO2 तुम्हारे SiO2 टा आसी, सेटे ताधर जहाँ mineral है ला तब कौन थी release mineral. So this is all about your Bowen's reaction series.